अच्छा जी, तो स्टार्टिंग ऑफ विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, योर चैप्टर नंबर 1। अब इसके दो पार्ट्स हैं। वी विल स्टडी टू चैप्टर्स जिसके अंदर यूल सी बीइंग देयर आर टू चैप्टर्स। दोनों चैप्टर्स के नाम है द फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। स्ट्रक्चर वाले में विल बी डूइंग मोस्टली द आईजीसीएसई कॉन्सेप्ट जिसके अंदर आपको एटॉमिक, एटम, न्यूक्लियस, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उसका पता होना चाहिए। मास नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्जेस, आयंस, एटम्स में फर्क क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप्स। दीज वुड बी द लर्निंग आउटकम्स ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर विच इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। बाकी आपको पता है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा विल बी डूइंग दी टॉपिकल। जो आपका सेकंड टॉपिक होगा, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 3 वुड बी इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, जिसके अंदर हम फिर वो पढ़ेंगे 1s2 2s2 एंड ईच ऑफ द शेल्स एंड subshells. So the learning outcomes of this chapter, atomic structure, would be describing what are protons, neutrons, and electrons, their relative charges, masses, the behavior of the beam of protons, neutrons, and the distribution of mass, charges. फिर how do we find the number of protons? फिर distinguishing between isotopes और हम कैसे एक scientific notation को denote करते हैं. We'll be looking that in this chapter. So inside the atom, when we talk about the subatomic particles, we have three subatomic particles. वो कौन कौन से हैं? Number one, we have the protons. Number two, we have the electrons, and number three, we have the neutrons. हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि जो ऑर्बिट्स हैं वहां क्या आपके पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ऑल्सो रिमेंबर कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन मेक अप द मास नंबर ऑफ द एटम. जो आपका मास ऑफ एन एटम होता है, दैट इज ऑल कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. क्योंकि सारा मास है ही इस न्यूक्लियस की वजह से. शेल्स का तो अपना कोई मास नहीं है, बल्कि है, लेकिन वो इतना छोटा है दैट वी डोंट इवन काउंट द मास व्हाइल कैलकुलेटिंग. हम शेल्स वाला मास देखते हैं. तो ज्यादातर अगर मैं कहता हूँ कि इस पूरे एटम का मास 2 है, तो 1.99999 न्यूक्लियस की वजह से होगा. बाकी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का भी कंट्रीब्यूशन होगा इन दैट. Electrons revolve around a region of space called the orbitals. We also know that electrons do not move in fixed orbits. The nucleus is made up of protons and neutrons, which contain almost all of the mass of an atom. This is because the mass of electrons is very small as compared to others, and the nucleus is positively charged because of the protons. जो protons होते हैं, उनका charge positive होता है, whereas जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका कोई चार्ज नहीं होता. पॉजिटिव और जीरो मिलके ओवरऑल क्या बनते हैं? पॉजिटिव. सो द न्यूक्लियस इटसेल्फ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में, वो सारे क्या हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज. तो दो किस्म के चार्जेस भी आपके पास एटम के अंदर प्रेजेंट है. द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. So the relative mass of protons is 1 and neutron is also 1, whereas electron का 1 over 1836 या 1838 या 1840 सारे acceptable होते हैं by the examiner. The charge of proton is +1 and electrons come -1, whereas neutrons do not have any charge. We also call them neutral. और अगर हम चार्ज की बात करें तो 1 + 1.6 इंटू ये जो 1 होता है 1c, ठीक है, ये +1c है, -1c. ये c क्या चीज होती है? c बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है. नाउ दिस इज नॉट दैट वी स्टडी इन आईजीसीएसई. एएस में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट 1c, ठीक है, 1c ऑफ 1 AMU जो होता है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो प्रोटॉन्स का +1.6 होता है और इलेक्ट्रॉन्स का -1.6 होता है. So if we look at behavior of the subatomic particles in the electric field, अब electric field क्या होती है? On one side we have a positive plate and on the other side we have a negative plate. So the protons will be deflected towards the negative plate. क्यों? हमें पता है that like charges or same charges repel and unlike different charges attract. Positive positive repel करेंगे, negative negative repel करेंगे, but positive negative हमेशा attract करेंगे. So proton is positive, it would be deflected towards the negative plate, the force of attraction. Electrons जो कि खुद negative है will be deflected towards the positive plate because they are negatively charged. तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो खुद negatively charged थे, they have deflected toward the positive, and जो protons जो खुद positively charged थे, they have deflected towards the negative plate. Whereas जो neutrons हैं, neutrons will not be deflected, will continue in the direction of motion because it is neutral and they are not charged. अब एक और आपको फर्क नजर आएगा कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन है और द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन ग्रेटर है देन द
angle of deflection of proton. Why is that? Because of the mass. इलेक्ट्रॉन का जो mass है that is smaller, तो उसकी जो deflection है वो भी larger है. प्रोटॉन का mass was larger, तो उसकी जो deflection है वो less है. So the angle of deflection is greater of the electron is greater than the angle of deflection of proton because the mass of the electron is smaller than proton, and electron of deflection is inversely proportional to charge over mass ratio. मतलब कि angle of deflection is inversely proportional to mass over charge रेशियो. डिफ्लेक्शन ज्यादा कब होगी? जब मास कम होगा. तो इन कंक्लूजन हमें क्या पता लगा? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, एंड प्रोटॉन्स आर मच हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन.